वन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है डिमांड एनालिसिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमांड एनालिसिस रिफर्स टू द इवैल्यूएशन of current and future demand for a commodity. It seeks to search out and measure the forces that determine sales. प्रोफेसर जॉर्डन ने कहा कि basically demand analysis is used for forecasting sales and manipulating demand. Objectives of demand analysis: forecasting sales and manipulating demand are the two main major purposes of demand analysis. Forecasting sales and manipulating demand. Forecasting sales means the estimation of the amount of sales anticipated estimation है कि कितना सेल होगा, ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड. मैनिपुलेशन ऑफ डिमांड implies taking necessary steps to influence and increase the future demand if the forecasted demand अगर inadequate है तब, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड. डिमांड क्या है? डिमांड एक डिज़ायर है. डिमांड इज द डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस. इसको अंडरलाइन कीजिएगा, किधर चल गया. डिमांड इज अ डिज़ायर and which is backed by willingness and ability to pay for a commodity. Ability to pay. According to Professor Hivdon जी के अनुसार demand means the various quantities of commodity of goods that would be purchased per, per unit time per time period at different prices in a given market. Desire for a commodity arises mainly from its utility. इसमें कहा गया कि जो डिज़ायर है कमोडिटी का वो अराइज होता है फ्रॉम इट्स यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब आप लोग जानते होंगे वांट सेटिस्फाइंग पावर. यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. Utility is a psychological phenomenon and it is highly subjective. It differs from consumer to consumer. ये सब्जेक्टिव होता है इसीलिए ये डिफर करता है फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर यूटिलिटी. इन शॉर्ट utility may be defined as the satisfaction which a consumer gets from the consumption of certain units or quantity of a commodity. अब हम लोग देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी इज द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो कि कंज्यूमर को हो रहा है ऑफ्टन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ पार्टिकुलर कमोडिटी. कंज्यूम करने के बाद obtains from consuming a given quantity of a particular commodity. Marginal utility is the additional utility from the consumption of an additional unit of commodity. In other words, marginal utility is the addition made to the total utility. Total utility में जो addition होता है वो marginal utility है by consuming one more unit of the commodity. ठीक है. Law of diminishing marginal utility. This law has been developed by the classical economist Professor Alfred Marshall. The law of diminishing marginal utility is one of the basic law of consumption. कंजप्शन का बेसिक लॉ है. मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होते रहता है, डिमिनिशिंग होते रहता है.
ठीक है।